नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर और बॉन्ड मार्केट अब खतरे में है, तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चीन और भारत दोनों ने अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा और पूरी दुनिया पर इसका क्या तूफानी असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक काइंडनेस से हमें हौसला अफजाई मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स असल में वो कर्ज है जो पूरी दुनिया अमेरिका को देती है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही अमेरिका दुनिया से लोन लेता है, लेकिन अपने बॉन्ड्स बेचकर। इन बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि अब तक दुनिया को भरोसा था अमेरिका कभी डूबेगा नहीं। लेकिन अब खेल बदल रहा है। चीन, जो सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है, धीरे धीरे अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर गोल्ड, ऑयल और अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पूरी इकोनॉमी डॉलर पर टिकी रहे। वहीं भारत भी बॉन्ड होल्डिंग बेचकर या घटाकर रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत अब डॉलर की बजाय गोल्ड और यूरो में भरोसा दिखा रहा है। दोनों देश ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब दुनिया सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगी। अब अगर बड़े देश बॉन्ड्स बेचते हैं तो अमेरिका पर 3 बड़े असर होंगे। पहला, ब्याज दरें बढ़ेंगी, अमेरिका को कर्ज लेना महंगा होगा। सेकंड, डॉलर पर दबाव, डॉलर की डिमांड घट सकती है। थर्ड, डेब्ट क्राइसिस, अमेरिका का पहले से ही 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और खतरनाक हो जाएगा। यानी जो अमेरिका हमेशा दूसरों की इकोनॉमी को डगमगाता था, अब उसकी नींव खुद हिल सकती है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, गोल्ड, युआन और ब्रिक्स करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल आर्थिक मंदी आ सकती है। अगर अमेरिका को ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ा तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे ब्राज़ील, अफ्रीका, तुर्की सब दबाव में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि डॉलर की ताकत अगले 10 सालों में कम हो जाएगी या फिर अमेरिका फिर से कोई नया गेम खेलकर अपनी करेंसी को बचा लेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार ऐसे ही बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आपसे मिस ना हों। Last year, Donald Trump had threatened 100% tariffs on BRICS nations if they ditched the US dollar. And this year, he's threatened to slap 10% additional tariffs on countries that align with the BRICS nations. De-dollarisation is Trump's and the US's biggest nightmare. Russia and China are stepping up their efforts to build alternative financial and payment systems, while India's Unified Payments Interface, one of the most advanced digital systems globally, is being extended to neighboring nations. Now, China is pushing its own cross-border digital payment platforms. These moves are part of a broader shift as countries are seeking to reduce dependence on the US dollar. And amongst the BRICS nations, China and Russia have initiated efforts to settle more trade in local currencies, while India is yet to make its stance clear, but adding to Trump's woes is the defining image from the SCO summit. Modi, Xi and Putin huddled together in an apparent exchange of assurances. All three of them are part of the BRICS, signaling greater cooperation between them. A disheartened Trump lamented that the United States had lost India and Russia to the deepest, darkest China. But within hours, the president made a U-turn and called Prime Minister Modi a good friend and emphasized that the United States and India have a special relationship and there are moments of disagreement. Now, Trump's comments stand in sharp contrast to his earlier statements, where he's called India a dead economy and has even levied 50% tariffs, which is the highest globally along with Brazil. Additionally, voices within the Trump administration, the likes of Peter Navarro and Scott Bessent and even Howard Lutnick, have come down very heavily in rhetoric against India.
The Trump administration's moves against India have received sharp criticism both at home and abroad. The Democrats have accused Donald Trump of alienating a key strategic ally, and many within Trump's own base feel very conflicted about the strident rhetoric against India. The former US ambassador to the United Nations, Nikki Haley, has been the most vocal, urging the Trump administration to treat India like a prized friend, prized free and democratic partner that it is. Globally, Europe is nudging Washington not to lose sight of the big picture. The Finnish President Alexander Stubbs has pushed the United States for a more dignified approach to foreign policy in the global south and India, or else risk losing the game altogether. The Russian President Vladimir Putin has also questioned the tariffs on India, saying that the United States can't talk to India like that, in a snub to the United States. The Japan's top trade negotiator has cancelled a planned visit to Washington on a day when Prime Minister Modi landed in Tokyo for the Japan-India Annual Summit. Tokyo will also be pouring in $67.9 billion of investments in India over the span of the next 10 years. Washington is now realizing that India is indispensable. From Ukrainian President Volodymyr Zelensky to European Union Chief von der Leyen, both have been in touch with Prime Minister Modi over the Ukraine war. Ursula von der Leyen even dialed Narendra Modi during a meeting of the Coalition of the Willing to discuss the Ukraine war. The latest to reach out is the French President Emmanuel Macron, who hosted the Coalition of the Willing, in which Trump too was a part clearly, and India's importance on the global stage, of course, cannot be denied. And American strategic interests dictate that India cannot be alienated. The indispensability of India as a force is, of course, becoming pretty clear to the United States from all quarters. Now, despite the upheaval, New Delhi has signaled that it has enough strategic partners to lean on and will stand up to American pressure to secure its own interests, making it clear that India is indispensable, undeniable, and inalienable. But Washington still has time to repair its strained ties with New Delhi, and a start can be made with a consistent and a durable policy towards India. For a president who is known to be impulsive, a reversal in the bipartisan consensus in Washington is imperative. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।